Hello everyone, this is Chinmay from now. The channel is completely different. Although the name is same, Mekana Clinic, but the thing is that I have changed my location. I have migrated to another city. Right now I am in Ratnagiri district. I have shifted my workshop from Pune to Ratnagiri. So now I am in Dapoli. This is our new location. We are in Konkan, and we are located on Dapoli Khed Road, which is in between in between Khed and Dapoli. We are near to Nore Fata, and we are in Wakoli. So we are near to Ratnagiri Bank. This video after a long time I'm posting up because recently I have shifted myself, so I was not having kind of a equipment which I wanted to record. So guys, this is regarding the Royal Enfield maintenance. I have started Royal Enfield workshop dedicated and exclusive workshop only for Royal Enfield and jet skis. So today we are going to discuss about the Royal Enfield vehicle. Although the process is same, caring process is same, but since I am working only on Royal Enfield, so I am going to talk about only Royal Enfield. So we are going to discuss about how to maintain the rear wake, particularly in coastal area, because coastal area has got a lot of salty weather. The weather is absolutely such kind of a weather where the sodium is very high, which causes a lot of rust and all. So today we are going to discuss about the rear wheel maintenance. Let's jump to the video. I'm so sorry, this is a little bit videographic, but more of a photographic, because I took the photographs, but unfortunately that time I was not having my recording equipment, so I couldn't record it. So today we will discuss about the rear wheel of the Royal Enfield. So while working on Royal Enfield rear wheel, best is to remove the rear mudguard, the fender. So it's good to work. Accessibility is there, so you can remove the rear wheel. As you can see, I removed the rear fender and removed the rear wheel. Make sure everything is accessible while working on rear wheel. It's tedious. Use always lithium based blue grease. If you don't have them, you can use multi-purpose grease for the axle and the bearing inner side, inner race. This is the cam of rear wheel brake. The brake cam got completely rusty because of this weather conditions. So best is to use abrasive wheel or the flap wheel to remove the rust from the shaft diameter, from the OD, and put the anti-seize grease on that. Anti-seize grease means which will not jam the cam. That will keep the the rear wheel brake in operational condition. You can use either nickel base or the copper base anti-seize grease. It's a special grease. Do not use multi-purpose grease. If you don't have it's okay, but better to use that only. And work on the rear brake rod. As you can see, this is a thread cleaner. Best is to use the thread cleaner to complete or the clear the threads, because rusty and mud cannot be removed like that way. Rust cannot be removed like that way. So best is to use the thread cleaner. Use brake cleaner, the spray to remove the dirt, green, greasy area surface, so the brake will be in better condition. Thanks for watching all the video. I hope you like the video. Subscribe, share, and of course you like the video. I hope you people understood how to take care of vehicles when you are at coastal area. As I mentioned before in my introduction, that weather is going to cause a lot of damage to your vehicle. So this is the way to take care of the vehicle, because if you don't, then of course you're going to have a damaged vehicle, and absolutely it will increase the load on your pocket, because if you don't maintain it, then you will have to replace a lot of spares. So before that, you better maintain it as per the as per the way I have showed it, so you can have a better ride quality. Thanks for watching and have a great day. नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज मैं मेकअप क्लिनिक में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं दोस्तों नए लोकेशन पे शिफ्ट हुआ हूं। पूना से मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दापोली जो गांव है वहां पे आया हूं। मेरा जो लोकेशन है दापोली खेड़ रोड पे, जो बीच में वाकोली करके एक गांव आता है, उसमें है। आप सोच रहे हैं गांव खेड़ा में क्या कर रहा हूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर जगह रॉयल एनफील्ड है तो वहाँ मैकेनिक भी रहना जरूरी है। तो एक बात वो है, और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने पूना से यहाँ पे शिफ्टिंग किया। दूसरी बात, हम रॉयल एनफील्ड एक्सक्लूसिव यानी कि डेडिकेटेड व्हीकल्स पे ही काम करने वाले हैं यहाँ पे, और जेट स्कीज पे यानी कि मरीन प्रोडक्ट पे।
तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की। मेरे पास क्लासिक 350 आई थी क्योंकि मैंने अपलोड जो किया है आज कर रहा हूँ, लेकिन इसका फोटोग्राफ जो थे कुछ दिनों पहले लिए थे, वो टाइम पे मेरे पास रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रॉयल एनफील्ड का मेंटेनेंस करते समय स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज में जब आप रहते हैं तो उसका जब आपको रिपेयरिंग करना है या मेंटेनेंस करना है, ये कैसा करना है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत खारा रहता है, यानी कि सॉल्टी वेदर रहता है, जिसमें गाड़ियों को रस्ट बहुत ज्यादा लगता है। यानी कि जो भी कोस्टल साइड रहता है, जो भी लोकेशन जिनकी जिनकी कोस्टल साइड है, उनको सबको यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये प्रॉब्लम अगर जब आती है तो आप अगर इमीडिएटली उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, यानी कि मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा खर्चा होएगा। तो वो करने से अच्छा आपको जब भी प्रॉब्लम आता है इमीडिएटली उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी रहेगी। कोस्टल एरिया में आने के बाद यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अलग है। सिटी का माहौल अलग रहता है, गांव खेड़ा का माहौल अलग रहता है। और यहाँ पे वेदर तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मस्त है, जो बहुत आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पे गाड़ियां भी काफी सारी हैं। रॉयल एनफील्ड डेडिकेटेड वर्कशॉप डालने का मतलब ये था कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ पे आया। और मुझे मरीन प्रोडक्ट्स में भी बहुत काफी इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे आने का एक दूसरा कारण था। तो आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आई होप आपको ये अच्छी लगी रहेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि आपको काफी सारे जो इन्फॉर्मेशन है रॉयल एनफील्ड के बारे में वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।